Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with RAHUL Sharma, your friend and guide. Sir, MEG 11 की वीडियो बहुत लेट हो चुकी है. We are waiting for a long period of time. फाइनली वीडियो आ गई और वीडियो को फॉलो करना आपका काम है. आपने का पेपर पैटर्न से लेके कौन से क्वेश्चन किस नॉवल से करने वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइस डेफिनेटली कुछ बेसिक्स को आपने फॉलो करना है एंड देन आई एम गोइंग टू कम विद द वीडियो जिसमें बताऊंगा कि आपने आंसर लिखने कैसे. फिलहाल बात करते हैं आज उन क्वेश्चंस की जो हमें करने हैं फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम ऑफ MEG 11 अमेरिकन नॉवल. कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है. दोज आर नॉट एबल टू क्रैक दिस पेपर अर्लियर गाइस, दिस इज योर टाइम व्हेन यू कैन स्कोर 70 प्लस. यस, आई कीप थिंग्स इन माइंड कि यार इस बार पेपर में क्या आ सकता है. तो हमने क्या किया, हमने हर चीज के हर नॉवल के कुछ 2 से 3 पॉइंट दिमाग में रखे कि यार ये वाले रखने हैं और इनको लेके चलेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली. सो गाइस इट्स अ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉलो द बेसिक्स. लेट्स स्टार्ट द पैटर्न ऑफ द पेपर. पेपर पैटर्न क्या रहेगा. द फर्स्ट वी गोइंग टू हैव द टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए डू हैव द क्वेश्चन, जस्ट द टू क्वेश्चंस, जिनमें से किसी एक को जस्ट वन यू गाइस नीड टू डू. And then there are the 4 questions that you have to choose from section B. And the number of question around 9 to 11. Yes, I repeat, it be 9 to 11 question in a whole soul paper. From that, you guys are going to get only 5. So we do have an ample choice. और हम बहुत आराम से कर सकते हैं. And it's not a hard and fast rule to do each and every novel. We can restrict ourselves to max 7. And then we can leave the 2. अब कौन सा छोड़ते हो, it's your choice guys. But हाँ, पेपर करना है तो पूरा शुरू करते हैं यहाँ से. The first thing, section A. सर कितने क्वेश्चन करने सेक्शन ए में, मतलब 5, 6, 7 नोट्स में दिए मैंने काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 3 कर गया. That is more than enough. Those who don't have the notes guys need not to worry. Just follow these 3 type of questions and you're going to crack the section A. First one, it's all American literature. अब इसमें मैं कहूँ अमेरिकन लिटरेचर 1917 और 19th सेंचुरी. मैंने यहाँ लिखा अमेरिकन लिटरेचर 1970. It does mean that the changes that took place in American literature in 17 or 19th century, or there are certain thematic concerns those are being mentioned in American literature in 19th century. ये डिटेल है कि आपको ऑन पे पहुंची, बस सारी की सारी हेडिंग यहाँ आ जाएगी. And then we do have an expected question from black fiction. Comment on the impact of black fiction in American literature. Oh, we need to give a complete detail of the impact of black fiction. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सर अफ्रीकन लिटरेचर की बात की गई है, उसको कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर कर लेना है. तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक हो गया अमेरिकन लिटरेचर 19th सेंचुरी में एंड द अदर वन द ब्लैक फिक्शन. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, नेचुरलिज्म इन अमेरिकन फिक्शन. व्हाट डू मीन बाय नेचुरलिज्म? Impact of naturalism in American literature, or we can say that the fiction story that was being mentioned, or the American novel. तो ये 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक्स ऑनेस्टली आपके ऑन टिप होने चाहिए. If you really want to crack that one question from section A. सेक्शन A का पहला क्वेश्चन कंफर्म है हम लोगों को करना है, तो उसके लिए हमें 3 टॉपिक्स ऑन टिप चाहिए. तो I hope that you guys are going to do this. Now jump to the next part. And that next part is really not the tough one. अब one by one लिखना शुरू करते हैं. From the first one, guys, अब choice is entirely yours. मैंने बोला कोई भी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये कहना और ये छोड़ देना है, बट पूरा का पूरा आपको ऑन टिप होना चाहिए. तो मैंने कहा फेवरेटिज्म लिया, मैंने अपने चॉइस से लिया एंड देन विल गो वन बाय वन टू ईच एंड एवरी नॉवल. स्टार्ट विद लॉस्ट ऑफ मोहिकन्स. द लॉस्ट ऑफ मोहिकन्स वी आर हैविंग 2 to 3 elements that we guys need to do. The first, it's a romantic elements in Lost Mohicans. Comment on the romantic Mohicans or the elements in Lost Mohicans and how it impacted the entire storyline. Now the second one, the relation between history and fiction. Guys, मैंने इसको अंडरलाइन किया है तो इसको प्लीज आप ऑन टिप रख लेना, ये दिमाग में होना चाहिए that this is one of the most important question as the expected one. The relation between the history and fiction in the Lost of Mohicans. तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया. नाउ जंप टू द सेकंड सेक्शन, दैट इज सिस्टर कैरी. ये नंबर 1 चॉइस है मेरी, ये नंबर 2 चॉइस है गाइस, नंबर 3 कर पर रिपीट कर रहा हूं, यही आगे बताओ ना बताओ. सिस्टर कैरी, नेचुरलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इन सिस्टर कैरी. सर सबसे ज्यादा पॉइंट इसी में बोलने वाला हूं मैं.
The first one, I repeat, the naturalism in Sister Carrie. Second one, novel of ideas. Yes, the Sister Carrie is a novel of ideas. So novel of ideas क्योंकि इसके कई सारे parts, layers को highlight किया गया. We do lots of things that have been mentioned in the storyline, तो वो on tip होनी चाहिए हमें. तो फर्स्ट आ गया सिस्टर कैरी में नेचुरलिज्म को क्लियर किया. विल कम टू नेक्स्ट वन, द नॉवल ऑफ आइडियाज, देन द क्रिटिक टू अमेरिकन सोसाइटी. हाउ डज सिस्टर कैरी इज अ क्रिटिक टू द अमेरिकन सोसाइटी, गिव रेफरेंस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ योर कोर्स. अब यहां मैंने इसको क्लियर किया. दिस इज ऑल अबाउट द योर कोर्स मींस सिस्टर कैरी. प्लॉट को ध्यान रखना. यू गाइस बी द मास्टर टू द प्लॉट व्हाइल राइटिंग दिस आंसर. तो ये हो गए फर्स्ट टू नॉवेल्स, द लॉस्ट ऑफ मोहिकन्स एंड द सिस्टर कैरी. नाउ आई जंप टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द ग्रेट गैट्सबाय. सो द ग्रेट गैट्सबाय में आप प्लीज एक चीज मेंशन नहीं है, कैरेक्टर पे ध्यान देना, कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान देना ग्रेट गैट्सबाय में. आई रिपीट, यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द ग्रेट गैट्सबाय. हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट वन, इट्स एन अमेरिकन ड्रीम. अब अमेरिकन ड्रीम का टॉपिक विद रिगार्ड टू ग्रेट गैट्सबाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक है that you guys need to be master of. And then come to the next one, the theme and character influence that was being shown by the writer in the Great Gatsby. अब मैंने कहा मेरे को ऑन टिप होना चाहिए, and I really need to know कि क्या है, उसको कैसे करेंगे, क्या बेसिस को हाईलाइट करना है. And then the last one, the Great Gatsby is an autobiographical novel. Comment. The Great Gatsby is an autobiographical novel. कमेंट करना है. तो ये हो गए वो टॉपिक जो हम लोगों को ऑन टिप होने चाहिए. नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट में हमें क्लियर करना है एक एक चीज को, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लिक दिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइस. तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आ रही है, दैट इज लाइट इन ऑगस्ट. आई रिपीट, लाइट इन ऑगस्ट में हमारे पास है थीम ऑफ एलिनेशन. गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द लाइट इन ऑगस्ट में, जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. तो यहां आ गया थीम ऑफ एलिनेशन एंड द थीम ऑफ रिलीजन. दो चीज हो गई, पहला थीम ऑफ एलिनेशन, द थीम ऑफ रिलीजन, जो हमें मेंशन की गई किसमें, लाइट इन ऑगस्ट में. देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द कैच इन द रे. ये मेरा नेक्स्ट चॉइस है गाइस. तो 1 2 3 फ्रॉम माय साइड, 3 4 तो कलर पर्पल ऑलवेज है, बट कैच इन द रे. Catch in the Race, it's one of the beautiful story we'll go through in course. इसमें है हमारा vision of childhood, the first vision of childhood and adulthood, and then we do come with a coming of age novel. Yeah, it's a coming of age novel. अब coming of age novel क्या होता है, growing up novel भी कह सकते हैं हम. Yes, and then we are having the characterization. In this novel we do expect a question from a character. सर कैरेक्टर आ सकता है, पूरी तरह फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो हमें वो प्रिपेयर करना है. वी गाइस नीड टू प्रिपेयर दैट क्वेश्चन. एंड नाउ आई नीड टू जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हाउ मेड टू डाउन, द इजीएस्ट वन एज कंपेयर्ड टू अदर वन. हियर वी हैव नंबर 1, थीमेटिक कंसर्न्स, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांसिस्को एंड एबल. The house made to down. So the story of two brothers, how they do survive, क्या कॉन्सेप्ट था, किन चीजों को क्लियर किया गया, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप होनी चाहिए while dealing with this novel. ये आपको हर तरह से बताना चाहिए. And then jump to the next one, the color purple, the fourth choice of mine, that is the color purple. आपने कहा color purple, sir, issues of racial discrimination definitely है. Sexual and class prejudice, one of the most important, and the last, deconstruction of gender roles, and the very last, it's a womanist test. 4 टॉपिक्स, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 के 4 टॉपिक, और चारों के चारों ऑन टिप होने चाहिए, बिकॉज यू गोइंग टू हैव दैट थिंग्स इन यू एंड जेआरएफ. अगर आप पढ़ते हैं तो वहां भी काम आने वाला है. तो गाइस ये बेस्ट है कि हम इसकी तैयारी यहां से करके चलते हैं, एंड विल गेट ऑल थिंग्स क्लियर. 4 फर्स्ट क्वेश्चन कंफर्म था, हमें करना है. तो ये तो गए 5. मैंने ये मेरी फर्स्ट चॉइस है जिनको मैं करूंगा. अब हो सकता है कि किसी ने लॉस्ट ऑफ हस्बैंड को चुना हो, या किसी ने दूसरा चुन लिया हो, या अभी 2 बाकी है. वी आर द फ्लोटिंग ऑफ एरा एंड
द ब्लैक स्प्रिंग, ऐसा नहीं कि वो नहीं बताऊंगा, वही बता रहा हूँ आपको, उनके भी टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दिस। ये मेरी चॉइस थी, आपकी चॉइस दूसरी हो सकती है। यस यू कैन हैव हियर द प्लॉटिंग ऑफ द पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं हमारे पास। एक्जिस्टेंशलिस्ट नॉवल या इट इज एंड निहिलिस्टिक कॉमेडी, निहिलिस्टिक कॉमेडी का क्वेश्चन कंफर्म आता गाइस, कंफर्म आएगा ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द ब्लैक स्प्रिंग, टाइटल appropriateness would come from black spring. It's ecstatic and transcendental vision. ब्लैक स्प्रिंग क्या है कि चीजों को क्लियर करना है। फ्रॉम माय साइड आई एम नॉट गोइंग टू डू द ब्लैक स्प्रिंग, बट हाँ अगर आपकी चॉइस है यू कैन गो फॉर इट गाइस। तो हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे फॉलो अप करनी है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू दीज क्वेश्चन ऑन योर टिप्स। उसके बाद कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आओ, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड दोज हु वांट द नोट्स टू गेट लास्ट बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, तो गाइस गो विद द नोट्स। वो फ्री नहीं है, उनके लिए पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, देन यू गेट द नोट्स एंड you guys can follow me on Insta. That is my Insta ID. Till then, keep watching, like, share, and subscribe. All the best, guys.